एकेडमी के उगते सूर्य की किरणों में नई ऊर्जा है। ऊर्जा नए उद्देश्य की, आत्मनिर्भरता की, ऊर्जा परिश्रम की, नवनिर्माण की, देशभक्ति की और ऊर्जा नए जोश, नए उत्साह के साथ देश सेवा में जीवन अग्रसर करने। कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूं कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस मेरे देश के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो तिरंगा सामने हो, जो सर झुके हो जाए, जो सर झुके तो वतन को नमन हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों और सज्जनों, टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स 40 और स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स 49 की दीक्षांत परेड समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास, कमांडेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, सभी अधिकारीगण एवं जेंटलमैन कैडेट्स की ओर से मैं कमेंट्री बूथ से लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी लूथरा, अपने साथी कमेंटेटर मैं कैप्टन कपिल सालिमठ, मैं जेंटलमैन कैडेट मनीष कुमार सिंह और मैं जेंटलमैन कैडेट आदित्य दलाल की ओर से आप सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। बड़े गर्व से इतला रही है आज की तारीख ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया ऑटम टर्म 2022 के कैलेंडर में, क्योंकि आज भारतीय थल सेना की नवीनतम प्री कमिश्निंग प्रशिक्षण एकेडमी की 22वीं दीक्षांत परेड है। हमारी आज की गौरवशाली परेड के स्रोत हैं हमारे कैडेट्स। ये भारत मां के वो सपूत हैं जो सूर्य बनेंगे, दीप बनेंगे। इनसे भारत देश विशाल बनेगा। सागर से गहरे प्रवेमान हिमगिरी से उन्नत भाल बनेंगे। संकल्पों जैसे अडिग अजिद ये भारत मां के दिक्पाल बनेंगे। दुश्मन को सबक सिखाने को ये काल बनेंगे, विकराल बनेंगे। मानवता की खातिर जग में ये दीन दुखी की ढाल बनेंगे। भूले भटकों को दिशा मिले ये ऐसी नई मशाल बनेंगे। आकाश बनेंगे, विश्वास बनेंगे, ये करमवीर यशपाल बनेंगे। हर ओर रहेंगे चरण इनके, हर ओर रहेंगे चरण इनके, ये ऐसी नई मिसाल बनेंगे, ये ऐसी नई मिसाल बनेंगे। Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Lieutenant General Paramjeet Singh Minhas, Commandant Officers Training Academy Gaya, members of the staff and all gentlemen cadets, we, Lieutenant Colonel Himani Luthra, Captain Kapil Salimat, Gentleman Cadet Manish Kumar Singh, and Gentleman Cadet Aditya Dalal, welcome you all on this momentous occasion of the 22nd passing out parade of this premier training institution. Today, 61 gentlemen cadets of Technical Entry Scheme 40 along with 8 gentlemen cadets of the Special Commission Officers Course 49 will get commissioned and will join the noble profession of arms as Indian Army officers. This parade also marks a grand occasion of commissioning of 8 gentlemen cadets from our friendly foreign countries of Bhutan, Vietnam and Sri Lanka. These gentlemen cadets are standing at the dawn of an exclusive, prestigious and virtuous career which will entrust them to be role models for their soldiers, leaders capable of guiding and inspiring troops and exemplifying the qualities befitting the profession of arms. It is also a momentous occasion for 72 gentlemen cadets of Technical Entry Scheme 46 who will pass out after having successfully completed their basic military training. Ladies and gentlemen, the Academy came into existence on 18 July 2011 under the able leadership of Lieutenant General Vijay Sharma, the first Commandant of the Academy. During the historical Raising Day ceremony, Lieutenant General K. Surendranath, the then General Officer Commanding-in-Chief Army Training Command, hoisted the Academy flag. This training institute was formally inaugurated by General V.K. Singh, the then Chief of Army Staff, on 14 November 2011. Today's parade marks the grand finale of the successful completion of training of the 22nd batch of gentlemen cadets from the Academy. देवियों और सज्जनों, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया की नींव 18 जुलाई 2011 को एक ऐतिहासिक सैन्य समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल विजय शर्मा द्वारा रखी गई थी।
लेफ्टिनेंट जनरल के सुरेंद्रनाथ, भूतपूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड, द्वारा उस भव्य समारोह में ध्वजारोहण कर भारतीय सेना के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ा गया था। अकादमी का औपचारिक उद्घाटन 14 नवंबर 2011 को जनरल वीके सिंह, तत्कालीन सेना प्रमुख द्वारा किया गया था। आज की ये परेड इस अकादमी की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर अकादमी की 22वीं बैच को राष्ट्र सुरक्षा की जिम्मेदारी से जोड़कर देश को एक सुरक्षित एवं बेहतरीन भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है। The colors of the academy are French grey and crimson red. The grey for steel denotes strength and resilience, whereas the red for blood signifies the ultimate sacrifice. The colors thus symbolize the living spirit of the academy, representing all that is noble and honorable. Speaking of honor and sacrifice of the men in olive green, we are reminded of these inspiring lines. Quartered in snow, silent to remain. When the bugle calls, they shall rise and march again. अकादमी के रंग हैं फ्रेंच ग्रे एवं क्रिम्सन लाल। फ्रेंच ग्रे रंग लोहे को सांकेतिक कर शक्ति एवं सहनशीलता को दर्शाता है, वहीं क्रिम्सन लाल लहू को सांकेतिक कर बलिदान को दर्शाता है। ये रंग अकादमी के स्फूर्ति भरे स्वरूप को सलामी देते हुए एक सम्माननीय एवं उत्कृष्ट दर्जा प्रदान करते हैं। The motto of the academy, ladies and gentlemen, is Shaurya, Gyan, Sankalp, literally meaning valor, wisdom and resolve, which epitomizes the code of conduct of a soldier under all circumstances and times. The academy has earnestly, industriously and zealously striven hard to inculcate this motto in all the gentlemen cadets passing out from this prestigious institution. Nested in the land of enlightenment, renowned for its affinity for learning, the academy focuses on cultivation of wisdom, the virtue which teaches these young men to uphold their ideals and follow the best course of action discerningly. The hallowed motto encapsulates the ethics of soldiering that spurs resolute and determined action, complete and decisive victory always. It is the fortitude and resoluteness of these young men which enables the Indian Army to protect the motherland under all circumstances and plant the nation's tricolor at soaring high peaks. इस अकादमी का सिद्धांत वाक्य है शौर्य, ज्ञान, संकल्प, जो कि एक सैनिक की बहुमुखी छवि को दर्शाता है। एक सैनिक किसी भी हालात में अपने आप को सशक्त रूप में ढालकर एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। अकादमी ने कठिन परिश्रम, असीमित उत्साह और बड़ी ही गंभीरता पूर्वक इस उक्ति की सार्थकता को सिद्ध करने हेतु जेंटलमैन कैडेट्स को इन विशेषताओं से अवगत कराया है। यह इनका मान और कभी हार ना मानने का भाव ही तो है देवियों और सज्जनों, कि ये नवयुवक कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने राष्ट्र की सुरक्षा में डटे रहेंगे। सेवा में तेरी भारत माँ तन मन लगाएंगे, फिर स्वर्ग का सहोदर तुझको बनाएंगे। तुझसे जने और तूने ही पालन किया हमारा, उपकार कितने करती क्या क्या गिनाएंगे। तेरे ऋणों को हर प्रयत्न से चुकाएंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरी सेवा में जीवन बिताएंगे, तेरी सेवा में जीवन बिताएंगे। Ladies and gentlemen, in view of the solemnity of the occasion, we request you to remain seated while the parade is in progress. You are requested to keep your mobile phones on silent mode. It is to bring to your attention the fact that it's a matter of great pride for the Academy that the solemn ceremony of the passing out parade is being covered by many esteemed print as well as electronic media houses and is being live streamed through the Doordarshan YouTube channel, whom also we cordially welcome. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि परेड और मार्च पास्ट के दौरान कृपया अपनी जगह पर बैठे रहें। कृपया परेड मैदान में फोटोग्राफी के लिए प्रवेश ना करें एवं फोटोग्राफी के दौरान फ्लैश का प्रयोग ना करें। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड पर रखें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अकादमी के लिए यह गौरव का विषय है कि आज
इस दीक्षांत परेड के प्रसारण एवं प्रकाशन हेतु इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का सम्मानित प्रतिनिधिमंडल हमारे बीच मौजूद है, जिनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। At present, there are two kinds of entries in the academy: technical entry scheme course and special commission officers course. Training at the academy commenced on 18 July 2011 with technical entry scheme course 25 and special commission officers course 28 being the first courses to undergo training within the portals of this academy. The training period for the technical entry scheme is 5 years and is conducted in 2 phases. In the first phase, basic military training of 1 year is imparted at Officers Training Academy, Gaya. In the second phase, technical training comprising 3 years pre-commission training and 1 year post-commission training is imparted at respective faculties of College of Military Engineering, Pune, Military College of Electronics and Mechanical Engineering, Sikandrabad, and Military College of Communication Engineering, Mau. Upon completion of the technical training leg, they earn an engineering degree. The training period for the Special Commission Officer course is 1 year prior to commission in this academy. वर्तमान में इस एकेडमी के 2 तरह के कोर्सेज हैं, स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स एवं टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स। टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स का कुल प्रशिक्षण काल 5 वर्ष Of Special Commission Officers course will be commissioned as officers today. In order to achieve and maintain very high standards of physical and mental training of the gentlemen cadets, various facets of training like academics, physical training, drill and sports form an integral part of a gentleman cadets routine. A lot of emphasis is being accorded to participative and interactive learning. The academy is equipped with numerous training facilities such as weapon training, swimming, equitation, adventure and hobby clubs. These facilities help the gentlemen cadets to engage in creative, artistic and adventurous pursuits. To give gentlemen cadets an exposure to military environment as well as to provide them an opportunity to relax and unwind from their daily routine, excursions are organized during the mid-term break to places of tourist interest. देवियों एवं सज्जनों, जेंटलमैन कैडेट्स को शारीरिक एवं मानसिक रूप से उत्कृष्ट मापदंड पर पहुंचाने के लिए सर्विस प्रशिक्षण, शैक्षणिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल, खेलकूद एवं क्लब प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण जेंटलमैन कैडेट्स की रोजाना दिनचर्या का अनिवार्य अंग है, क्योंकि यह उनमें अनुशासन एवं वचनबद्धता को बढ़ाता है। अकादमी में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे शस्त्र प्रशिक्षण, तैराकी, घुड़सवारी और विभिन्न क्लब जेंटलमैन कैडेट्स के रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देती हैं। जेंटलमैन कैडेट्स को सैन्य वातावरण से अवगत कराने हेतु उन्हें अन्य सैनिक संस्थानों में भ्रमण के लिए भेजा जाता है। Ladies and gentlemen, at present, the academy has 2 battalions with 2 companies each. Khetarpal Battalion comprises Gurays and Kalidhar Company, and Batra Battalion comprises Tithwal and Rizangla Company. These battalions and companies have been christened with the names of gallant war heroes and victorious battle honors respectively. Khetarpal Battalion has been named in the everlasting memory of 2nd Lieutenant Arun Khetarpal, who was posthumously awarded the Param Veer Chakra, the highest military decoration for gallantry in the Battle of Basantar in 1971. He achieved martyrdom
at the young age of 21 years with a service spanning just 6 months. Batra Battalion has been named after the young brave heart Captain Vikram Batra Paramveer Chakra, who, in order to safeguard the territorial integrity of our motherland, made the supreme sacrifice during the Kargil War. This young hero laid down his life at the age of 25 years with just 3 years of service. वर्तमान में इस अकादमी में 2 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन में 2 कंपनियां हैं। खेतरपाल बटालियन में गुरेज और कालीधर कंपनी एवं बत्रा बटालियन में तिथवाल और रिजांगला कंपनी है। इन बटालियन एवं कंपनियों का नामांकन शूरवीर सेनानियों और विजय युद्धों की याद में किया गया है। खेतरपाल बटालियन का नाम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल परमवीर चक्र की याद में रखा गया है, जिन्होंने 1971 के बसंतर के युद्ध में केवल 21 वर्ष की आयु और 6 माह की सेवा में अपने असीम साहस और शूरवीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति प्राप्त की। बत्रा बटालियन का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र की याद में रखा गया है, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु और मात्र 3 वर्ष की सेवा में भारत मां की संपूर्णता और एकता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। Ladies and gentlemen, drill is the bedrock of discipline in the armed forces. It is here at this parade ground before you where we lay the foundation of discipline for the future officers of the armed forces. It ensures upright posture, good bearing, turnout, and conduct on parade. If men are to give their best in war, they must be united. Drill instills discipline, which creates a sense of unity in all ranks. To those of you who have an aesthetic disposition, drill moments will symbolize the very rhyme and rhythm of poetry of a well-ordered life. And that's precisely the primary aim of this institution, to train our gentlemen cadets in the art of cultivating a way of life, in which the highest and the noblest attributes of discipline, character, and courage are not only blended, but are also nurtured and nourished. The custodian of drill, discipline and turnout at the Officers Training Academy Gaya is the Academy Adjutant, Lieutenant Colonel Ravindra Singh of 21st Battalion, the Madras Regiment. He is ably assisted by the Assistant Adjutant, Major Sonal Chauhan of 20th Battalion, the Jat Regiment, and a team of some of the finest drill instructors from a wide range of Indian Army regiments, headed by Subedar Major Mannu K.M. of 12th Battalion, the Maratha Light Infantry Regiment. Ladies and gentlemen, the officers of the Technical Entry Scheme and Special Commission Officers Course have carved a niche for themselves in the annals of our great army, being honored by winning many prestigious decorations for their gallant acts. They have been honored with numerous gallantry awards for their acts of exemplary valor shown at the times of war and counterinsurgency operations. भारतीय थल सेना के स्वर्णिम और गौरवान्वित इतिहास में स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स एवं टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स ने अपनी वीरता और शौर्य का परिचय देते हुए सेना का हमेशा मान बढ़ाया है। इन सैन्य अधिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए देश तथा सेना को गौरवान्वित किया है और साथ ही बलिदान एवं शूरवीरता का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन्हीं शूरवीरों में से एक हैं लेफ्टिनेंट महेश कुमार शौर्य चक्र मरणोपरांत 5 महार रेजिमेंट, जिन्होंने टेक पटरी नामक स्थान पर दिनांक 18 जून सन 2011 को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार अपने प्राणों की परवाह किए बिना आतंकवादियों को मार गिराया। इस महान कार्य को अंजाम देते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। मातृभूमि, तेरे चरणों में अपना शीश झुकाऊंगा, सुन पुकार, हंस बलिवेदी पर अपने प्राण चढ़ाऊंगा। जीवन का उद्देश्य तुम्हारा कण कण हरा बनाना, कर परास्त तेरे रिपुओं को निज कर्तव्य निभाऊंगा। सुन पुकार, हंस बलिवेदी पर अपने प्राण चढ़ाऊंगा। देवियों और सज्जनों, आप सबको जान के अत्यंत गर्व होगा कि आज हमारे समक्ष ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया के कुछ ऐसे अधिकारी गण मौजूद हैं
जिन्होंने अपनी सेवाओं और अदम्य साहस से भारतीय सेना को गौरवान्वित किया है। ये अधिकारीगण हैं ब्रिगेडियर संदीप चैटर्जी, सेना मेडल वीरता, कर्नल शैतान सिंह, युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट कर्नल देशमुख विक्रांत अरुण कीर्ति चक्र, मेजर आशुतोष तोमर, सेना मेडल वीरता। चंद पंक्तियां देवियों और सज्जनों मुझे याद आ रही हैं, जो कि मैं इन शूरवीरों के लिए आपके समक्ष रखना चाहूंगी। अपने खून से देश की सरहद को सींचा है हमने, हर रोज मौत और तूफानों से खेला है हमने, दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरा है हमने, मेरा देश महफूज रहे इसलिए हर दर्द झेला है हमने, मेरा देश महफूज रहे इसलिए हर दर्द झेला है हमने। I am a warrior. Defending my nation is my dharma. I will train my mind, body, and spirit to fight. Excel in all devices and weapons of war, present and future. Always protect the weak, be truthful and forthright, be humane, cultured, and compassionate. That, ladies and gentlemen, was the markers call, heralding the entry of markers of the contingents to the parade ground. They now emerge through the gate of the fort to take up their respective positions on the inspection line. The gentlemen cadets you see marching onto the parade ground are the markers, taking their position. The rest of the contingents would soon enter the parade ground from behind the ramparts. Here they move to the left and to the right of the parade ground and would line up contingent-wise. The markers lined up on the inspection line from left to right as you see them are Company Sergeant Major Ashutosh Rathod, Company Sergeant Major Ronak Chaturvedi, Company Quartermaster Sergeant Saurabh Bharadwaj, and Company Quartermaster Sergeant Utkarsh Dwivedi. Ladies and gentlemen, soon the advance call will be sounded, an indication for the parade to march through the ramparts. Ladies and gentlemen, the advance call has just been sounded. Full of motivation and discipline, here comes the heroes of Officers Training Academy Gaya on the sounds of trumpet and beats of drums. A big round of applause, ladies and gentlemen. You can see the contingents marching smartly onto the parade ground to take their positions, led by Titwal Company, followed by Guray's Company. Here comes Kalidhar Company. And at the end is Rizangla Company. Leading the contingents is Academy Under Officer Gitin Sharma, who is commanding today's parade.
welcome them with a big round of applause. At the end of the parade, you can see Lieutenant Colonel Ravinder Singh, the Adjutant Officers Training Academy, Gaya, astride the Grey Charger Twister. The Adjutant's magnificent mount Twister is participating in his 19th passing out parade. Twister was awarded the General Officer Commanding-in-Chief, Army Trading Command Commendation Card on 15th of January 2022. Ladies and gentlemen, the parade is now lined up for review. The order of contingents formed in front of you is: to your extreme left is the contingent of appointments from Khetarpal Battalion commanded by Wing Cadet Adjutant Ambar Chaturvedi. The first contingent is Titwal Company commanded by Senior Under Officer Rahul Sharat Patil. The second contingent is Gurays Company commanded by Senior Under Officer Sarthak Vyas. The third contingent is Kalidhar Company commanded by Senior Under Officer Kartike Raghuvanshi. The fourth contingent to your right is Razangla Company commanded by Senior Under Officer Aditya Raj Tiwari. Next is the appointments contingent from Batra Battalion commanded by Wing Cadet Captain Manvendra Singh Shekhawat. Next to the contingent of appointments is Academy Cadet Adjutant Deepak Sartunge. Ladies and gentlemen, the officer to your extreme left, mounted on the Grey Charger Twister, is the Adjutant of the Academy, Lieutenant Colonel Ravinder Singh. He is an alumnus of Cadet Training Wing, Military College of Telecommunication Engineering, Mau, and Indian Military Academy, Dehradun,
and is from Technical Entry Scheme, Course Serial 13. Lieutenant Colonel Ravinder Singh was commissioned into 17th Battalion, the Madras Regiment, a battalion renowned for her glorious history, and then later on sidestepped to 21st Battalion, the Madras Regiment, as part of the new racing team. Ladies and gentlemen, Lieutenant Colonel Ravinder Singh has excelled in all his mandatory infantry courses and is a graduate from the prestigious Royal Thai Army Command and General Staff College, Thailand. The officer has garnered rich operational experience while serving in high altitude areas in Sikkim, Jammu and Kashmir and Arunachal Pradesh. The officer has also served in counter-insurgency operations in Assam. Lieutenant Colonel Ravinder Singh was previously posted as Instructor Class B at Infantry School, Mao, wherein for his excellence in imparting quality training to student officers, he was awarded the General Officer Commanding-in-Chief, Army Training Command Commendation Card. Lieutenant Colonel Ravinder Singh tenanted the appointment of second in command of 21st Battalion, the Madras Regiment, before assuming the prestigious appointment of Adjutant, Officers Training Academy, Gaya, on 3rd October 2022. Ladies and gentlemen, it is the Adjutant and the entire team of Adjutant's branch who have toiled day in and day out to train these gentlemen cadets in drill and have finally achieved such high standards of drill movements which you all shall witness today. देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही देर में परेड की सलामी लेने के लिए हमारे समक्ष मौजूद होंगे मेजर जनरल अनुराग विज, डिप्टी कमांडेंट एवं चीफ इंस्ट्रक्टर, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, गया. Ladies and gentlemen, the parade is awaiting the arrival of Major General Anurag Vij, Deputy Commandant and Chief Instructor, Officers Training Academy, Gaya, to take the salute. Major General Anurag Vij is an alumnus of National Defence Academy, Khadagwasla and Indian Military Academy, Dehradun. He was commissioned into 71 Medium Artillery Regiment in June 1990. A graduate of the Defence Service Staff College, Wellington and College of Defence Management, Sikandrabad. The General Officer has an illustrious military career spanning over 32 years, during which he has held a number of prestigious command, staff and instructional appointments. He has commanded 171 Medium Regiment and was the Deputy Commandant, RT Center, Hyderabad. Some of the important staff and command appointments held by him include Brigade Major at Headquarters 15, Infantry Brigade, General Staff Officer Grade 1 at Integrated Headquarters of Ministry of Defence Army, Colonel Quartermaster Operations at Headquarters 15 Corps, Colonel Quartermaster Headquarters 9 Infantry Div, Commander 97 RT Brigade, Commander 15 Corps RT Brigade and Brig RT at Headquarters 9 Corps. He has done instructor tenure at School of RT and was in charge of gunnery training as Commander Gunnery Wing. During his service, the General Officer has participated in Operation Rakshak, Operation Vijay and Operation Parakram. For his exemplary service, he has been awarded with the Chief of Army Staff Commendation Card twice. देवियों और सज्जनों, अब हम डिप्टी कमांडेंट एवं चीफ इंस्ट्रक्टर ओटीए गया की प्रतीक्षा में. सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ. ध्रुव जैसी मुझे भक्ति दे दे, अर्जुन जैसी मुझे शक्ति दे दे. गीता ज्ञान सुना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ. वीर हकीकत मैं बन जाऊं, धर्म पे अपना शीश कटाऊं. Ladies and gentlemen, Mrs. Sheetal Vij, Vice Chairperson, Family Welfare Organization, Officers Training Academy, Gaya, is among us for gracing the occasion. We extend our warm welcome wishes to Mrs. Sheetal Vij. ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ. गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, शिवाजी जैसी आग लगा दे. हाथ हथियार थमा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ. केशव सा ध्येय निष्ठ बना दे माँ, माधव सा ज्ञान करा दे. जीवन देश सेवा में चढ़ा दूं माँ,
ऐसा वीर बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां। Ladies and gentlemen, we have among us to take the salute Major General Anurag Vij, Deputy Commandant and Chief Instructor, Officers Training Academy, Gaya. Ladies and gentlemen, in a short while from now, Lieutenant General Paramjeet Singh Minhas, Commandant Officers Training Academy Gaya, will arrive to take the salute. देवियों और सज्जनों, अब से कुछ ही देर में परेड की सलामी लेने के लिए हमारे समक्ष मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास, कमांडेंट अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया। Lieutenant General Paramjeet Singh Minhas is an alumnus of National Defence Academy Khadakwasla and Indian Military Academy Dehradun. He has the unique honor of being the Academy Cadet Adjutant at both National Defence Academy and Indian Military Academy. Also, passing out as the Academy Cadet Captain and Academy Under Officer at these training institutes respectively. He has commanded the passing out parade at National Defence Academy and Indian Military Academy. He was awarded the coveted Sword of Honor for the best all-round performance during his passing out parade. In 1985, he was commissioned as a second-generation officer into Central India Horse, a prestigious armored regiment of the Indian Army. During his illustrious and distinguished military career, spanning nearly 4 decades, the general has excelled in all the courses. He has held important command, staff and instructional appointments both in India and abroad. He has served with the United Nations Interim Force in Lebanon and has attended the prestigious National War College course at Washington, D.C., United States of America. He holds master's degree in defense and strategic studies from Defense Service Staff College, Wellington, and master's degree in national security strategy from Maryland, United States of America. The general officer has served as brigade major of a mountain brigade opposite the Chinese forces along the line of actual control. He has served as an armored brigade commander, general officer commanding an armored division, and as general officer commanding the Madhya Bharat area. Before assuming the appointment of Commandant of Officers Training Academy Gaya, he has commanded the Desert Corps. For his professional diligence, the general officer has been awarded General Officer Commanding in Chief Eastern Command, General Officer Commanding in Chief Western Command, and Vice Chief of Army Staff Commendation Cards.
देवी और सज्जनों, इस वक्त हम सभी की निगाहें लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह मिन्हास, कमांडेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया की प्रतीक्षा में। सीमा पर अड़ जाने को, मंगल तिलक लगाने को, देखो देश बुलाता है। देर देर जरा भी करो नहीं, तूफानों से डरना नहीं, दुश्मन से भिड़ जाने को, नए हौसलों से भर जाने को, देखो देश बुलाता है। बैठो नहीं उड़ान भरो, बिगुल बजा जयगान करो, समता रस सरसाने को, शांति सुधा बरसाने को, देखो देश बुलाता है। रुको नहीं, हुंकार करो, सपनों को साकार करो, जौहर सभी दिखाने को, हर दीवार गिराने को, देखो देश बुलाता है, देखो देश बुलाता है। Ladies and gentlemen, Mrs. Aruna Minhas, Chairperson, Family Welfare Organization and the First Lady of Officers Training Academy, Gaya, is among us for gracing the occasion. We extend our warm welcome wishes to Mrs. Aruna Minhas. Ladies and gentlemen, we have among us to take the salute Lieutenant General Paramjeet Singh Minhas, Commandant, Officers Training Academy, Gaya. Ladies and gentlemen, in a short while from now, Lieutenant General Surinder Singh Mahal, Ati Vishishta Seva Medal, Vishishta Seva Medal, General Officer Commanding in Chief Army Training Command, the reviewing officer for today's passing out parade, will arrive to take the salute. Lieutenant General Surendra Singh Mahal was commissioned into 41 Armored Regiment in December 1984, a regiment which he also commanded. He has a distinguished and illustrious military career spanning nearly 4 decades. The General Officer is an alumnus of Defence Service Staff College, Wellington, Higher Command Course, Army War College, Mao, and National Defence College, New Delhi. The General Officer assumed the appointment of General Officer Commanding-in-Chief Army Training Command on 1st of April 2022. The General Officer carries extensive operational experience and has the distinction of commanding an independent armored brigade in the desert sector, a rapid in the western sector, and the prestigious Kharga Strike Corps. He has also commanded the one and only combatized Uttar Bharat area along the line of actual control. Instructional appointments denoted by the General Officer include instructor at the Armored Corps Center and School and senior instructor at Defence Service Staff College. His staff appointments include 2 Military Operations Directorate tenures as General Staff Officer Grade 1
and as Additional Director General of Military Operations. He has also served as General Staff Officer Grade 1 Operations in Headquarters, Counterinsurgency, Victor Force. Director Force Structuring in Perspective Planning Directorate, Principal Director in the Strategic Forces Command, and as Deputy Military Secretary in Command Headquarters. His last staff appointment was Director General, Manpower and Personal Services in Adjutants General's Branch. For his exemplary dedication and devotion, the General Officer has been awarded Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, Chief of Army Staff Commendation Card, and General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command Commendation Card. The General Officer is married to Mrs. Sunaina Singh Mahal, a former air hostess with Air India International and an aviation hospitality instructor who contributes to social welfare activities under the Army Wives Welfare Association umbrella. देवी और सज्जनों, सभी की निगाहें इस दीक्षांत परेड को अपनी उपस्थिति से और भी शोभायमान बनाने हेतु हमारे मुख्य अतिथि की सैल्यूटिंग डेज पर मौजूदगी की प्रतीक्षा में आज देवी और सज्जनों, हमारे कैडेट्स का फौलादी सीना ये बयां कर रहा है कि चाहे कितनी ही हो कठिनाइयां, कितने ही हो तूफान, हर कठिनाई, हर तूफान का हिम्मत से सामना करने को हम हैं तैयार, हम हैं तैयार। Ladies and gentlemen, in a short while from now, you'll be hearing the fanfare which will herald the arrival of the reviewing officer. We just heard the fanfare heralding the arrival of reviewing officer of today's parade, who would be reaching the saluting days in a short while. देवी और सज्जनों, हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं आज की परेड के समीक्षा अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह महल कुछ ही क्षणों में हमारे समक्ष मौजूद होंगे। ओटीए गया ड्रिल स्क्वायर आज राष्ट्र भावना के गीत गुनगुना रहा है। हर कैडेट का सीना आज कई महीनों के कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त हुई मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा कर गर्व से तना हुआ है। आज इन सब कैडेट्स की तीव्र और सटीक कदम ताल से उड़ते हुए ड्रिल स्क्वायर के पत्थर इन कैडेट्स की शपथ का प्रतीक बनेंगे कि देश की सेवा होगा धर्म हमारा और देशवासियों की सेवा होगा कर्म हमारा। कई महीनों के कठिन प्रशिक्षण ने भारत मां की ढाल हमारे कैडेट्स को आंधियों की गोद में खेलना सिखाया है। ड्रिल स्क्वायर के हर कंकर से टकराते ये जोशीले कदमों से निकलती ये चिंगारियां साक्षी होंगी कि यहाँ के प्रशिक्षण ने इन्हें सिंधु का कलेजा मत अमृत खोज लाना सिखाया है। Ladies and gentlemen, Mrs. Sunaina Singh Mahal, Regional President, Army Wives Welfare Association, Army Training Command, is among us for gracing the occasion. A very warm welcome to Mrs. Sunaina Singh Mahal. देवी और सज्जनों, हमारे कैडेट्स की गाथाओं का परचम विश्वव्यापी होगा, जो कि हमारे यशस्वी एवं आदर्शवादी समीक्षा अधिकारी के सौम्य और सक्षम मार्गदर्शन से ही संभव हुआ है। Ladies and gentlemen, we have among us Lieutenant General Surender Singh Mahal, General Officer Commanding in Chief, Army Training Command, the reviewing officer of today's passing out parade.
The parade commander, Academy Under Officer Gitin Sharma, is now marching forward to give report to the reviewing officer. He is a 6-star gold torchie, merit card in cross country, merit card in football, and is also the recipient of the bayonet pin. श्रीमान अवसर सैनिक अकादमी 50 अंडर अवसर 127 जर्मन कैडेट फ्रंट मार्च फ्रंट मिशन क्लब हजरत Situan Sambi Kerana Pagi Berat Jom देवियों और सज्जनों, आपके समक्ष प्रस्तुत यह परेड मैदान, जिसे ड्रिल स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है, इस अकादमी का पवित्र स्थल है। आइए सुनते हैं इसी की गाथा, इसी की जुबानी। तिरंगे के तीनों रंगों एवं अकेडमी की चारों कंपनियों के परचम के रंगों की परिधान पहने, अपने कैडेट्स के परिश्रम से बहने वाले पवित्र पसीने का तिलक लगाए, लाल एवं सलेटी रंग का मुकुट पहने, अपने दोनों कानों में विजयंत टैंक के कुंडल पहने, कंक्रीट की कालिमा का काजल अपनी आंखों में लगाए, फूलों की भव्यता से सुशोभित सैल्यूटिंग डेज को अपने अधरों पर सजाए, अपनी भुजाओं में आप सभी देशभक्त दर्शकों को संजोए एवं चेटवुड क्रेडो को अपने हृदय में बसाए। गौतम बुद्ध की पवित्र और पावन धरती पे गर्व से खड़ा मैं ड्रिल स्क्वायर आज अपने इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा हूं। संकल्प से सिद्धि की दास्तान लिखने जा रहा हूं। देवियों और सज्जनों, मैं ड्रिल स्क्वायर आज गर्व से इतला रहा हूं, गर्व से इतला रहा हूं।
देवियों एवं सज्जनों, सलामी मंच से दक्षिण दिशा में आप देख सकते हैं प्रेरणा स्तंभ। स्तंभ पर तीनों ही दिशाओं में चैटवुड द्वारा उद्घोषित ऐतिहासिक सिद्धांत, जिसे चैटवुड क्रेडो के नाम से जाना जाता है, नक्काशित किया गया है। यह वह बुनियादी सिद्धांत है जो कि अकादमी के प्रत्येक जेंटलमैन कैडेट के लहू में दौड़ता है। साथ ही प्रत्येक सैनिक को हर कदम पर अपने कर्तव्यों और दृढ़ निश्चय की याद दिलाता है। यह उत्तम व्यक्तित्व एवं उत्कृष्ट जीवन शैली का संकेत है। ये सदा ही प्रत्येक जेंटलमैन कैडेट के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और भविष्य में भी देश पर मर मिटने की भावना से परिपूर्ण कराता रहेगा। The safety, honor, and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of the men you command come next. Your own ease, comfort, and safety come last, always and every time. Ladies and gentlemen, this basic principle of Chetwood Credo lays the strong foundation of military leadership in the gentlemen cadets at the military academies in India. And Officers Training Academy Gaya is no exception to the same. That is why these immortal lines find place on the Prerna Sthambh of the academy. Ladies and gentlemen, the parade commander, Academy Under Officer Gitin Sharma, is now proceeding back to his position to take command of the parade and lead the contingents in front of the saluting dais. सीनों में है शोले भरे और आंखों में अंगारे हैं। देख के मेरी तेज चाल ये धरती अंबर हारे हैं। The contingents are now marching to the tune of Kadam Kadam Badhaye Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja. Their swords and rifles shimmering in the morning light,
pledging fidelity to the motherland. On their shoulders will rest enormous responsibilities which they will fulfill with unflinching devotion. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our cadets. देवी और सज्जनों, कदमों से कदमों को मिलाते हुए, कंधों से कंधा मिलाते हुए, हमारे जोशीले कैडेट्स सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए अपनी उत्कृष्ट प्रशिक्षण का अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए, देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से इनके मनोबल को बढ़ाएं। These young and zealous catalysts of the army will be guarding frontiers and posts located at towering altitudes in the ice-capped mountains of craggy frontiers, where, other than the enemy, survival against the fury of nature is a challenge in itself. Whether it is the glaciers in the north, the desert frontiers in the west, or the inhospitable jungle terrain of the east, these young men will safeguard the borders of our nation always and every time. For it is their utmost duty to ensure the defense of the motherland. The whole nation takes pride in them, and the land resonates with their praise. They who for their country die shall fill an honored grave. Glory lights the soldier's tomb, and beauty weeps the brave. कदम कदम बढ़ाए जा, हर मोड़ पर अथक रहे, तू मुस्कुराए जा, ये गीत राष्ट्र प्रेम का तू गुनगुनाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, सच्चाइयों के मार्ग पर तू राष्ट्र रक्षा में सर्वस्व, खुद को लुटाए जा, खुद को लुटाए जा, ये गीत राष्ट्र प्रेम का तू गुनगुनाए जा। तुझको न भय कोई कहीं, न बंधनों का जोर है, तू मूक प्रेरी शांति का, चाहे चहूं दिश शोर है। देवी और सज्जनों, ये देखिए 140 करोड़ भारतीयों के दिल पे अंकित और धड़कनों में बसे अनमोल बोल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन में जोशीले कदमों के साथ कंधों से कंधा मिलाते हुए सैल्यूटिंग डेज की तरफ गर्व से सीना तान कर बढ़ते हुए हमारे कैडेट्स। क्या आप जानते हैं, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर रिटायर्ड राकेश शर्मा से सन 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब पूछा अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है आपको, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां। Leading the parade is Academy Under Officer Kitin Sharma. Next is the Khetarpal Battalion Appointments Contingent commanded by Wing Cadet Adjutant Ambar Chaturvedi. The first contingent is the Dwal Company commanded by Senior Under Officer Rahul Sharat Patil. Contingent is Grace Company. Leading them and saluting smartly is Senior Under Officer Sarthak Vyas. The third contingent is Kalidhar Company. Leading them is Senior Under Officer Kartikeya Raghuvanshi. Contingent moving towards the saluting days is Razangla Company commanded by Senior Under Officer Aditya Raj Tiwari.
Next is the Batra Battalion Appointments Contingent commanded by Wing Cadet Captain Manvendra Singh Shekhawat. Marching next to the saluting dais is Academy Cadet Adjutant Deepak Sartunge. And moving behind the line of contingents is the Academy Adjutant Lieutenant Colonel Ravinder Singh astride the magnificent twister. Please put your hands together, ladies and gentlemen, for them. भारतीय सेना बंदूक का ट्रिगर दबाकर दुश्मनों के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में ही महारत नहीं रखती, बल्कि अपनी उंगलियों से वाद्य यंत्रों से धुन निकालकर आपके होंठों को गुनगुनाने और पांव को थपथपाने के लिए विवश करने की कला में भी निपुण है। ब्यूगल की साउंड पे कंटिंजेंट मार्कर्स को परेड की शुरुआत का संकेत देने से लेकर तेज चाल के द्वारा कैडेट के जोश को दर्शाने में, स्लो मार्च के द्वारा सभी कैडेट्स को अंतिम पक तक पहुंचाने में और इस भव्य परेड को उत्कृष्ट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे नायब सूबेदार धर्मवीर यादव के नेतृत्व में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया और पंजाब रेजिमेंटल सेंटर की ब्रास बैंड टीम। The history of Indian Army is replete with saga of courage and sacrifice. Our brave soldiers have fought like lions and routed the enemy who has ever dared to cast nefarious eye on us, threatening the sovereignty and honor of our motherland. With utter disregard to their own personal safety, these gallant brave hearts have displayed an iron will to face all adversities unflinchingly, to safeguard our nation's territorial integrity. Our valiant soldiers have also earned laurels for the nation in the field of sports, adventure activities, and as inspiring statesmen who always stand for the good of the country. These names are legion and are etched in golden letters in the annals of our history. They, no doubt, will inspire these young men passing out of the portals of this academy to emulate the gallant deeds of these brave soldiers when their day of reckoning comes. These gentlemen cadets, our future leaders who have been burnished at this premier institution, will serve as the vellum of our nation and further enrich our glorious and heroic traditions. जब बजेगी रणभेरी मत करना तुम देरी, सुनकर भारत माँ की ललकार, भारतीय सेना के वीर सैनिकों तुम हो जाना तैयार। जब देगा गगन चेतावनी की खतरे में है भारत माँ की शान, भारतीय सेना के वीर सैनिकों तुम हो जाना तैयार, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, सहयोग सुलह और अमन के हमराज हम ही हैं, विश्व शांति के लिए उठने वाली सबसे बुलंद आवाज हम ही हैं। स्वागतम का गीत है दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी हम ही हैं।
देवियों और सज्जनों, अब आप देख सकते हैं कि तिथवाल कंपनी, जो कि वसंत सत्र 2022 की चैंपियन कंपनी थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर अकादमी को लौटा रही है। जूनियर अंडर ऑफिसर अंकित खत्री परेड मैदान के मध्य में बैनर सौंप रहे हैं। यह बैनर पूरे प्रशिक्षण काल के दौरान सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कंपनी को आज की परेड के समीक्षा अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। Ladies and gentlemen, in a short while from now, the reviewing officer will award medals to those gentlemen cadets who have performed outstandingly well during the course of their training and will present the Chief of Army Staff banner to the company that has emerged as the best company in the inter-company competitions. The banner is presented to the company that has scored highest marks in service subjects, weapon training, physical training, drill and sports. The awards which will be presented today are Sword of Honor for being the overall best amongst gentlemen cadets of Technical Entry Scheme course serial number 40. The winner is Academy Under Officer Gitin Sharma. He is also the winner of the gold medal for standing first in order of merit amongst gentlemen cadets from Technical Entry Scheme course serial 40. Silver medal for standing second in the overall order of merit amongst Technical Entry Scheme course serial 40. The award goes to Wing Cadet Adjutant Ambar Chaturvedi. Bronze medal is awarded to the gentleman cadet who is third in the overall order of merit amongst Technical Entry Scheme course serial 40. The winner is Wing Cadet Captain Manvendra Singh Shekhawat. Silver medal for standing first in Special Commission Officer serial 49. The award goes to Academy Cadet Adjutant Deepak Sartunge. Chief of Army Staff banner is presented to the company which has performed outstandingly well in all fields. Autumn Term 2022. The winner is Kalidhar Company. भारत माँ के सपूत हैं हम, कल के स्वप्न सुनहले हैं हम, नया सवेरा लाएंगे, लड़ने रण में जाएंगे। शेरों की दाढ़ों को गिनते, देख सके कब अपना छिनते, हाथ बड़ा यदि दुश्मन का तो तोड़ लाएंगे हम सब मिलके। प्रिय स्वदेश के रखवाले हम अपना धर्म निभाएंगे, लड़ने रण में जाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं जग की आशा, सभी सुखी हों यही अभिलाषा, सभी सुखी हों यही अभिलाषा।
Proper. Salute. Proper. Proper. Get. Ladies and gentlemen, the Chief of Army Staff banner is now being brought onto the parade ground. May we now request the reviewing officer to kindly present the awards to the winners. The Sword of Honor is awarded to Academy Under Officer Gitin Sharma. He will also be awarded the Gold Medal. He will be commissioned into 1st Battalion 1 Gorkha Rifles. Silver Medal is awarded to Wing Cadet Adjutant Ambar Chaturvedi. He will be commissioned into 99 Medium Artillery Regiment. Bronze Medal is awarded to Wing Cadet Captain Manvendra Singh Shekhawat. He will be commissioned into Corps of Signals. Silver Medal for Special Commission Officers Course is awarded to Academy Cadet Adjutant Deepak Sartunge. He will be commissioned into 27th Battalion, the Rajput Regiment. Chief of Army Staff banner for Autumn Term 2022 is awarded to Kalidhar Company. This is indeed a proud moment for the gentlemen cadets of Kalidhar Company, whose names will be etched in gold for winning the Chief of Army Staff banner. This is the result of the hard work, dedication and unbreakable resolve displayed by Kalidhar Company over the last 6 months. In honor of this victory, the gentlemen cadets of Kalidhar Company will wear their lanyards on the right shoulder for spring term 2023. भारत के उत्थान प्रगति का रथ न रुकने देंगे। खाते हैं हम शपथ, निशान कभी न झुकने देंगे, निशान कभी न झुकने देंगे। फर फर कर लहराए ये निशान, हम सबको अपनी शान बताता। ओटीए गया की प्रबल प्रबुद्ध प्रशिक्षण शक्ति का रहस्य समझाता। अखिल विश्व में नहीं किसी के आगे कभी झुकेगा। नई उमंगों, नए उल्लासों से ये निशान रोज उगेगा।
ये निशान रोज उगेगा। We may now request the reviewing officer of today's proceedings to kindly address the parade. Commandant, Lieutenant General Paramjit Singh Minhas, esteemed guests from our friendly foreign countries, proud parents and guardians, instructors and staff of the Academy, distinguished guests, members of the media here, and most importantly, the gentlemen cadets on parade today. At the outset, on behalf of the Chief of Army Staff, let me congratulate the gentlemen cadets of the passing out courses, that is namely the 40th Technical Entry Scheme course and the 49th SCO course. It is a privilege for me to be reviewing your passing out parade this morning. And I must say that you all have done yourselves, as also all your instructors, very proud with your immaculate smartness and bearing on the parade. So my compliments to the parade commander and all the gentlemen cadets on parade. Very well done and keep it up. During your long and demanding training at the OTA and the CTWs, you were ably supported by instructors and staff, all of whom wished you the very best at all times. Never forget their contribution. They will now be watching you from the sidelines hereafter, filled with pride that can only be matched by parents and friends who are also witness to your historic moment as you take your rightful place in the most professional, battle-hardened, and the second largest army in the world. Gentlemen cadets, you are today joining an organization that is not only capable, but is respected throughout the world. The soldiers you will lead are the finest in the world. They will unquestioningly follow, provided you offer them the requisite leadership, provided you care for them as much as you would do to your kith and kin, if not more, and provided you have the professional knowledge and the competence to steer them through adverse situations. You should always keep in mind that soldiers in your unit or subunit are your comrade in arms, both in war and peace. Make them feel secure and safe. Inspire and instill a sense of confidence and trust in them by setting a personal example through all their trials and tribulations. Young leaders like you have proved their mettle always and every time, be it full-scale war or sub-conventional conflicts like counterinsurgency and counter-terrorism, be it peacekeeping operations or even in humanitarian disaster relief operations. You all have proved, young soldiers and officers have proved themselves. Gentlemen cadets, the nation has reposed its faith in you by commissioning you to lead their soldiers. No small feat
and something you and your parents should be justifiably proud of. Remain true to the namak, naam, namak and nishan of this great nation and always uphold the traditions of our great army. An army which has a formidable image at home and abroad and is known for its professionalism, courage, patriotism, discipline, and dedication. Always continue the quest for excellence on the path of constant self-improvement with self-driven exuberance. When faced with difficult choices, have the courage of conviction to always select the harder right. Even the motto of your alma mater, which is Shaurya, Gyan, and Sankalp, that is valor, wisdom, and resolve. It means being the one with the strength and courage of a warrior and the knowledge and wisdom of a scholar. It means being the one who must take tough decisions and lead your men in the face of any adversity. आज यहाँ उपस्थित सभी माता पिता और परिवारों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने आशीर्वाद की वजह से और ओटीए की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज आपके बच्चे जांबाज योद्धा बनकर आपके सामने खड़े हैं और देश की रक्षा के लिए तैयार है। आने वाले समय में उन पर आपको ही नहीं पूरे देश को भी गर्व होगा। I also take this opportunity to compliment the 8 gentlemen cadets from our friendly foreign countries of Bhutan, Sri Lanka, and Vietnam for having completed their training. I am sure that the training imparted to you at OTA Gaya and the respective CTWs has been useful to provide your country with technologically savvy military leaders with the highest professional, intellectual, moral, and physical caliber. We look forward to more opportunities in the future for you all to connect with your Indian colleagues and the Academy and to further strengthen the bonds of friendship between our people in general and the Army in particular. Finally, I would once again like to convey our heartiest congratulations to all the passing out gentlemen cadets for your illustrious efforts and excellent parade. My felicitations to the proud parents too who are here to witness this cherished moment. I also congratulate all the award winners and the champion company for their excellent performance. In a few moments from now, you will take your final step, the Antim Pag, and become a commissioned officer, ready to face the challenges and opportunities that await you. Embrace this opportunity with confidence, passion, and cheer. This day certainly would not have been possible without the untiring efforts of the faculty and training staff of OTA Gaya and the CTWs, and my compliments to them. With these thoughts, I feel deeply privileged to now set you off on this fulfilling journey that you all have chosen well. A journey to make our nation proud. A journey that will be exciting, adventurous, and professionally satisfying. And as you step out, always remember, when in charge, take charge. Jai Hind,
and God bless you all. Thank you very much, sir, for your precious words of guidance, appreciation, insight, and inspiration, which will become a source of strength for all our cadets. Ladies and gentlemen, the passing out gentlemen cadets will soon take a formal leave of this institution. Shortly, the band will play the soulful melody All Lang Syne, which will orchestrate the slow march leading to the Antim Pag. The championship banner is now being handed over by Senior Under Officer Kartike Raghuvanshi of Kalidhar Company, the champion company of this term, to the representative of Junior Course. This is symbolic and will serve as an inspiration for the junior course to emulate their seniors in the coming term. देवियों और सज्जनों, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं 10 दिसंबर की सुबह लगभग 10 बजे धीरे धीरे बढ़ता हुआ थोड़ा थोड़ा तापमान, ये बढ़ता कम होता तापमान सूर्य का तो है ही, साथ ही हमारे टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स 40 और स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स 49 के कैडेट्स की जोश का भी है, उनके कठिन प्रयास का भी है और कई महीनों के अटूट परिश्रम का है।
Lieutenant Colonel Sanjog Shinde, Major Abhay Pundir, and Major S.S. Kushu, and their co-pilots Captain Abhijit, Captain Kalra, and Captain Kuldeep Tomar from Recce and Observation Flight, carrying the national flag, Indian Army flag, and Officers Training Academy Gaya flag. These aircrafts are flying past over the passing out course as they move towards the Antim Pug on this auspicious occasion of passing out parade of Technical Entry Scheme Course 40 and Special Commission Officers Course 49. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the heroes of Officers Training Academy Gaya. देवी और सज्जनों, अब आपके सामने हमारे कैडेट्स कई महीनों के लंबे एवं कठिन परिश्रम से भरे सफर को सफल कर ऑल लैंग साइन की धुन पे स्लो मार्च के माध्यम से सलामी मंच का सीना चीरते हुए अंतिम पग पर अपने कदम रख ओटीए गया से अपने मिलिट्री प्रशिक्षण का सफर को पूर्ण विराम लगाते हुए जोरदार तालियां देवी और सज्जनों। And now, here we put a voice to the silent prayer of all the proud parents and guardians of the passing out course seated for the occasion. This is the prayer I say tonight. It is for my loved one who must fight. This prayer is not for this one alone, but for all the military far from home. I ask you to keep them safe and sound on their way to where they're bound. We love those that are asked to fight, so keep them safe for us tonight. तुम अंधियाला दूर करोगे, पढ़ लिख कर विद्वान बनोगे, धीर वीर बलवान बनोगे, ऐसे काम करोगे जिससे प्रिय स्वदेश की शान बनोगे। वंदन तुम्हें हमारा, वंदन तुम्हें हमारा। प्रहरी स्वदेश के जो बलिदान की हवन में आहुति स्वयं बनेंगे, वंदन तुम्हें हमारा, वंदन तुम्हें हमारा। जूझोगे चुनौतियों से, आने न दोगे कुछ आंच भी वतन पर, अर्चन तुम्हें हमारा, वंदन तुम्हें हमारा। निस्वार्थ भाव से कर्तव्य में अडिग रहोगे, छूकर बुलंदियों को गर्वित सबको करोगे, अर्चन तुम्हें हमारा, वंदन तुम्हें हमारा। भारत माँ के रखवालों, वीरों तुम्हें प्रणाम। दुश्मन चाहे उत्तर से हो, पूरब से हो, पश्चिम से हो, चाहे हो दक्षिण से, उसके मुख पर पहनाना तुम कठिन लगाम। मात ना खाना, जीतना सब संग्राम। हर विपदा में देश का कण कण हरा बनाना, तन मन धन सब अर्पित कर भारत माँ का अनुपम रूप सजाना। मान देश का तुम, गौरव देश का तुम, मान देश का तुम, गौरव देश का तुम हो भारत माँ का ताज। वीरों तुम्हें प्रणाम, वीरों तुम्हें प्रणाम। The aircrafts are now displaying the national flag, followed by the army flag. And at the end is Officers Training Academy flag. जिस प्रकार हर शुरुआत का अंत निश्चित है, इसी प्रकार इस ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का अंत दंडपाल की सलामी के साथ होता है। यहाँ मौजूद अतिथिगण एवं जेंटलमैन कैडेट्स के अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर बने रहें। अब रास्ते कठिन नहीं लगते देशवासियों, अब मंजिलें दूर नहीं लगती, क्योंकि यह है नया भारत, समर्थ भारत, सिद्धि युक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, संस्कारित भारत, जो कि विकसित भारत की दिशा में गतिमान है। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों और सज्जनों, आज की इस भव्य परेड समारोह को मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी लूथरा, अपने साथी कमेंटेटर्स कैप्टन कपिल सालिमत, जेंटलमैन कैडेट मनीष कुमार,
जेंटलमैन कैडेट आदित्य दलाल के साथ मिलकर पूर्ण विराम लगाती हूं एवं इस परेड में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेतु उन्हें अन्य सैनिक संस्थानों में भ्रमण के लिए भेजा जाता है। Ladies and gentlemen, at present, the Academy has 2 battalions with 2 companies each.